Hello everyone, welcome to this video in which we will be discussing the PYQ questions of unit digit which is part of number system. काफ़ी important topic है and काफ़ी easy भी है. चलो, you'd look at question from the year 2025, 2024 and going beyond. Let's start with our first question from the year 2025. What is the unit digit in the multiplication of 1 into 3 into 5 into 7 into 9 going up to 999? ये sequence, as soon as you look at this sequence, आपको ये समझ में आ रहा है, it's a sequence of odd numbers starting from 1. एंड यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप इस तरीके से चेक करो. 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15, सो आई ओनली टेक 5 विच मीन्स यहाँ तक यूनिट डिजिट 5 आ रहा है. नाउ 7 इंटू 5 35, लास्ट डिजिट इज 5, सो अप टू हियर ऑल्सो द यूनिट डिजिट इज 5. 9 इंटू 5 45, so up to here also it is 5. Next number would be 11. 11 into 5 is 55. This is also 5 up to here. तो मैं एक रूल पे आ जाता हूँ. दिस इज़ द बेसिक मेथड ऑफ अप्रोचिंग, बट मुझे स्मार्टर अप्रोच में ये रूल काम करना चाहिए दैट विथ 5 into odd number will always give you the last digit as 5. Always. कोई एक्सेप्शन नहीं है. सेकेंड रूल, 5 इंटू अ इवन नंबर, द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज 0. क्यों? 5 के साथ जैसे आपने एक इवन नंबर में भी 2, 4, 6 और 8 मल्टीप्लाई किया, आपके पेयर बन गए 5 और 2 के. 5 इंटू 2 इन प्रोडक्ट फॉर्म इज ऑलवेज अ 0. ये ध्यान रखना है. अब मेरे पास जो नंबर्स बन रहे हैं वो सारे ऑड हैं और 5 गिवन है मेरे पास. 5 into this odd number or this or any of the other odd numbers, the last digit is always 5. Option C. Moving ahead. What is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 to the power 30? जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो, it is basically 30 और how many times? 30 into 30 into 30 into 30, 30 times. एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, है ना. The result of this will be a very large number to comprehend. Now it is obvious since it is ending in 0, तो लास्ट में zeros तो होंगे. कितने होंगे वो मुझे फाइंड आउट अभी नहीं करना है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ. बट यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ zeros here. बट what is the rightmost digit preceding the zeros? एक बार ये zeros complete हो जाएंगे तो जो rightmost digit होगा which is a non-zero digit, वो क्या होगा? This is what we are looking at. ब्रेक डाउन करने का तरीका क्या है? आप 30 को ब्रेक डाउन कर सकते हो एज 3 into 10 to the power 30. ऐसा क्यों करा? Simply because I need to separate the zeros. और 30 में से 0 सेपरेट करने के लिए टेक द मल्टीपल्स. सो 10 को मैंने सेपरेट कर दिया. नाउ आई नो दिस इज 3 to the power 30 इंटू 10 to the power 30. सो हाउ मेनी zeros एट द एंड? 10 to the power 30 मीन्स 30 zeros. ये तो ऑब्वियस है. दिस टाइम देर आर 30 zeros. उसके बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, दिस इज द नॉन ज़ीरो डिजिट. And what is the last digit of this? The last digit of 3 to the power 30 is basically dividing it by 4. Remainder आया 2. तो अब ये नंबर बन गया 3 to the power 2 which is 9. So the last digit of this बड़ा सा number is 9 and that is what we are looking for. The rightmost digit preceding the zeros. सो दिस इज 9. तो यहाँ पे 9 आएगा एंड यहाँ पे भी बाकी सारे डिजिट्स होंगे दैट वी आर नॉट सपोज टू टेक आउट. चलो मूविंग अहेड. व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ 57242? स्टेप 1 ये कहता है दैट यू कैन ऑलवेज रिड्यूस, जैसे ये बेस है और ये उसके ऊपर पावर या एक्सपोनेंट,
तो when you are finding the unit digit, simple step is we can write down the base by only the last digit or the unit digit. So this question becomes 2 to the power 9 into 7 into 5 into 3 into 1. बस मुझे ये चेक करना है. Now, can I say 9 into 5 is 45, 7 into 3 is 21, into 1 is 21. 45 1 टाइम जा रहा है, तो 5 and 4 ये 2 टाइम्स जा रहा है. So this is 945. So 2 to the power 945. अब अगर मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, I just need to divide this by 4. What is our remainder? The remainder is 1. So it becomes 2 to the power 1, which will give me the last digit as 2. Option A is our correct fit. ये मैं आपको steps बताते हुए चल रहा हूँ. Therefore, it might seem कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, but ideally you only need 30 seconds and you are good with these questions. 30 सेकेंड में आराम से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं. Alright, if 3 to the power 2019 is divided by 10, what is the remainder? So division by 10 is what we are looking out for. सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है एनी नंबर बीट, जैसे मान लो 143 इज अ 3 डिजिट नंबर. व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय 10 and see the remainder is always equal to the last digit of the number. So the last digit of number here is 143, so it would be 3. अब चेक कर लो 143 को 10 से डिवाइड करा, what do you have as remainder? 3. So these two are same. Now our question is 3 to the power 2019, a very large number. When I divide this number by 10, what should be the remainder? The remainder should be equal to the last digit of 3 to the power 2019. कैसे निकालेंगे? सिंपल है. आप इसका अगर लास्ट डिजिट निकालो तो यू डिवाइड 19 by 4. What is our remainder? The remainder is 3. Now it becomes 3 to the power 3, which is 27, or the last digit is 7. Option C is our correct fit. Why? Because the last digit of this value is 7. Therefore, the remainder will also be 7 when I divide this whole number by 10. Next question. तो ये इस बार आने के chances है because it has been asked in the year 2020 and a similar question in the year 2018. आपके प्रैक्टिस सेट में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन रखा है. मे बी इन प्रैक्टिस शीट नंबर 2 आई इंक्लूड फ्यू मोर क्वेश्चंस. ये बेसिक एडिशन पे बेस्ड है. इस टाइप के क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ध्यान देना. मैं इन ब्लैंक्स को, दीज आर द ब्लैंक्स एंड फॉर विच डिजिट, सो इट इंडिकेट्स एनी ब्लैंक विल बी फिल्ड बाय अ डिजिट. Digit is singularity, either 0, 1, 2, 3, but we know the digit could be only 2, 3, 4, 5. पहले addition पे काम करते हैं and I'm replacing this blank with the value n so that it's easier. बस मैं calculation करूँगा, मैं बार बार ये box ना बनाऊँ, so I'll be writing it as n for now. This is equal to n, so it becomes n plus 1n plus 5n plus nn plus n1 is equal to 1nn. How do you add numbers? We add numbers as n plus 1n plus 5n plus nn plus n1. This is 1nn. अब आप देखो, when you add these numbers n, 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 so it is 3 times n, 4 times n. So the summation of this is 4 times n plus 1. This should be equal to the last digit which is n. ये क्वेश्चन का पार्ट है. अब मेरे पास n के लिए क्या वैल्यूज हो सकते हैं? n is basically this box.
So n could be either 2, 3, 4 or 5. Always we have to take help of the options. So I'm taking help of option number A. I'm putting n as 2. Now this becomes 4 into 2 which is 8. 8 plus 1 which is 9. तो क्या 9 और यहाँ पे 2 इक्वल है? नहीं है. So this is wrong. Option B. I'm writing 3. 4 into 3, 12 plus 1, we get 13. So the last digit of this is 3. The last digit here is 3. Bingo. This matches. Therefore, this is our correct answer. Now, if you want to be sure ये correct answer है, आप एक बारी option C and option D को check कर लो. Option C, 4. So this is 4 into 4, 16 plus 1, 17. Last digit does not match. Option D, 5. So this becomes 5 fours are 20 plus 1, 21. Last digit here is 1. It should have been 5. तो ये भी गलत है. Option B is our correct fit. Now, in this case, the box has been replaced with a dot. मैं dot को भी replace कर देता हूँ n से. So our question becomes n plus 1n plus 2n plus n3 plus n1. This is equal to 2, 1n. Let's add n plus 1n plus 2n plus n3 plus n1. This is equal to 2, 1n. अब आप ज़रा चेक करो quickly. 1, 2, 3. So it is actually 3 times n plus 3 plus 1. So it is plus 4. 3 plus 1, 4. It should be equal to the last digit being n. Okay. Now let's take help of the options. Option number A, 4. 3 into 4, 4 3s are 12 plus 4, we get 16. So 6 is our last digit, but here the last digit should have been 4. तो ये गलत है. Option number B, 5. 5 into 3, 3 into 5, 15 plus 4, 19. N here is 5, N here is 9. Again does not match. Rule out. Option C, 6. 3 into 6, 18 plus 4, 22. Last digit is 2. Last digit should have been 6. Does not match. Now I know option D is the correct fit. क्यों? Because we have 4 options and none of them is none of these. So definitely one of them has to be correct and that is the last one. Check कर लेते हैं. 8. 3 into 8, 24 plus 4, we get 28. The last digit of this matches. So this is the correct fit. Option D is our correct fit. But अब ज़रा आप देखो कि when you are used to with these type of question, हम अपने process को speed up और कैसे कर सकते हैं? Do I actually need to write it completely? Or can I only focus on the last digits? So I can be quick and write it as n plus n plus n. So it is 3n plus 3 plus 1. So 3 times n plus 4. This should be equal to n. See how quickly, without even writing any of it, मैंने ये equation जो है ये बना लिया. Because step is, you have a question like this, try to form this equation as quickly as possible. अब देखो इससे मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना. n n n n 4 times n, 1 plus 1. This is equal to the last digit of this is n. How much of time did I take? Maybe 10 seconds, 15 seconds max. मैंने क्या ये सारी चीज़ों को लिखा? Did I write any of it? No. So this is doable. अभी we'll go by the process so that
वंस वी अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे जहन में बैठ जाए. When we look at a problem, we know these are the steps. So we can definitely eliminate certain steps. This is the reason I'm majorly focusing कि आप concept पे काम करो. Once you have that conceptual understanding, तो आप खुद से you will leave out so many steps. But ideally, leaving out step means I should know what is actually going on. और उसके basis पे the shortcuts are developed. चलो. I hope this helps. Take care. Let me know how many of them you got correct.